चलो ये क्या था? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये टेस्ट किस लिए काम आता है? For checking the function is many one or one one. यस। क्या करते हैं इस फंक्शन में? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर से लेके ऐसे ग्राफ के ऊपर टॉप टू बॉटम स्कैन करते हैं। जेरोक्स की लाइन कैसे स्कैन होती है? ऐसे। सर क्यूआर के। हाँ यस, क्यूआर से। बराबर। तो अगर कहीं पे भी आप रख के देख लो कि अगर वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट में कट कर ले तो वो फंक्शन मैनी वन है। बराबर। Yes, sir. ओके। चलो जैसे कि अगर ये साइन फंक्शन होता तो पता चल ही जाता ना कि मैनी वन है Yes. कि नहीं? यस सर। ऐसे। बराबर। चलो अब अपना क्वेश्चन क्या था? fx इक्वल्स टू 1/x। ठीक है। चलो अब हमें एलजेब्रा से करना है। तो हियर f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2 करने का। तो 1/x1 इज इक्वल्स टू 1/x2। ओ इसका मतलब क्या हुआ? x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। समझ में आया? चलो अब इस फंक्शन की रेंज निकालो। रेंज निकालो फंक्शन की, क्या आएगा बताओ? सर होल कोडोमेन। सर r-0। r minus 0 R minus 0. इज इक्वल टू क्या? कोडोमेन। देयरफॉर f इज कैसा फंक्शन? Onto. ऑनटू। अगर डोमेन में r के बदले में n रख दे, ठीक है। चलो डोमेन में r के बदले में n रख दे। अब नए कलर में कर रहा हूं, लाल कलर का सम कर रहा हूं। n टू r माइनस 0। चलो तो भी क्या ये ऑन टू रहेगा? ये क्वेश्चन है, बोलो। यस सर। कैसे? नो सर। देखो 1 का आंसर क्या आएगा? 1। 2 का आंसर क्या आएगा? 2. 1/2। हाँ, 3 का 1/2. आंसर क्या आएगा? 1/3। 1/3। बराबर। हाँ तो अब जो है आपकी रेंज दोस्तों 1 1 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। यस बट सर। क्या हो जाएगी? 1 के बाद सीधा 1/2, 1/2 के बाद सीधा 1/3, 1/3 से 1/4। अब ये 1 से लेके 1/2 के बीच में कितने नंबर मिस हो गए? Infinite. इनफाइनाइट। तो अब आपका रेंज जो है ये पूरा का पूरा कोडोमेन नहीं आएगा। बराबर ना? Yes, sir. ओके। तो क्या होगा? Into function. तो इनटू हो जाएगा। यस। सर 1 मिनट स्क्रीन करो। चलो अगर 1 1 है मतलब क्या लिखना है? ये वाली स्टोरी लिखनी है। बराबर है। मैनी वन में तो हम प्रूव करके ही दिखा देते हैं। સર એકવાર આ ફરીથી સમજાવો કોડોમેન કયું? જે તમે રીઝન આપ્યું ને કે 1 પછી ઇન્ફાઇનાઇટ નંબર્સ આવે છે પણ હાફ વચ્ચે 1 અને હાફ ની વચ્ચે કેટલા બધા નંબર છૂટી ગયા? હા ઓકે એટલે પૂરેપૂરી પહેલા કેવું હતું કે આખું r આવતું હતું, ઠીક છે, એક્સેપ્ટ 0. બરાબર. અહીંયા આવતું હતું, અહીંયા નથી આવતું. હા ઓકે જેમ કે -1 જ છૂટી ગયું. હા બરાબર. ઠીક છે. -1/2 નથી આવતું એટલે બહુ બધા લોકો છૂટી ગયા કહેવાનો મતલબ. એટલે હવે પૂરેપૂરો r મતલબ યુ નો r સર આપણે ઇક્વલ ટુ લખવું હોય તો બધા એલિમેન્ટ જોવે ને કોડોમેન ના, તો જ ઇક્વલ ટુ લખાય ને. લખાય. હા
ठीक है, यस सर। देखो इसीलिए है ना होमवर्क में मैं आपको इंसिस्ट कर रहा था। कोई बात नहीं, आज डाउट पूछो बिंदास, होलसेल में डाउट पूछो, ठीक है। नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, बराबर। चलो क्वेश्चन पढ़ लो पहले। मेरा आतंकवादी सो गया। ओके, इंजेक्टिविटी मतलब, वन फंक्शन है कि नहीं? चलो पहला फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बट फंक्शन कहाँ से कहाँ है, n to n है। चलो ओके, अब देखो अलग अलग वैल्यू अलग अलग आंसर, तो मैंने तो सीधी स्टोरी चिपका दी। fx1 इज इक्वल्स टू fx2, मतलब क्या, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या, x1 इक्वल टू, अब देखो इसका मतलब दोस्तों होता है प्लस माइनस x2, बट प्लस माइनस मैं यहाँ जानबूझ के नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स में Natural numbers. नेगेटिव एन टू था। एन। हाँ, therefore f is 1 1, बोले तो इंजेक्टिव। अब इसकी रेंज निकालो, चलो रेंज क्या आएगी, बोलो 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 बोलो। एन। एन पूछ रू n, 1 1 4 4 1 4 9 16, 16। स्क्वायर नंबर्स बस था। डॉट क्या पूरा n आया? नो नो नहीं ना, नो सर, is not equal to codomain, therefore f is that is into function. into function, correct। चलो अब दूसरा करो। अब क्या है, z to z है, ओ z to z है, बराबर, ये छापने लायक सम था। चलो z to z बराबर, ओके चेंज आया, एंड दैट इज फ्रॉम z to z। ओके, तो देखो अब यहाँ पे x1 इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस Plus x होगा, minus बराबर है। तो f इज, many one function. anyone. हाँ, आप एक तरीका आपके पास ये है लिखने का, f इज मेनी वन फंक्शन, बराबर। और अगर आप ऐसे ना लिखना चाहो, ठीक है, ये लिखो या फिर ये लिखो, f ऑफ माइनस 2 कितना, 4, f ऑफ 2 कितना, 4, therefore f is many one। आपको जो अच्छा लगे वो, बराबर। સર 1 1 માં બી આવું એક્ઝામ્પલ થી એક્સપ્લેન કરી શકીએ? 1 માં ઓછામાં ઓછા 1 કરોડ એક્ઝામ્પલ લખવા પડે, અને 1 કરોડ એક્ઝામ્પલ લખીએ ને તો એક પેજ ભરાઈ જાય। ખબર પડી? હા સર, તો મેની વન માં તો ચાલે ને એક એક્ઝામ્પલ થી? મિની 1 માં તો ચાલી જ ગયું ને, મિની 1 માં ચાલે, પક્કું ચાલે। ઓકે यस बिंदास पूछो, बराबर। चलो रेंज बोलो। 1 4 9 1 4 9 16 25। same. पूछ रू
એક ઝીરો આગળ આવે yes sir. Yes, તો zero. આ ખરેખર 6 સ્ટાન્ડર્ડ જેવા છોકરાઓ થઈ ગયા છો સાવ. હવે હા zero આવે. તો પછી યાર આ તો સારું છે કે મને આવડે છે, બાકી તો તમે મને બધું ભૂલાઈ દો. બરાબર, ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ કોડોમેન. ચલો, therefore f is Two function. into function. Yes. चलो, third one, f is from R to R. थर्ड वन में मैं वापस ये काम कर सकता हूं, इसको छाप सकता हूं एक बार और. बराबर, चलो थर्ड वन. अब फंक्शन कहां से कहां है? R R to R. टू R है. बराबर, ओके. देखो, स्टोरी में बहुत थोड़े 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 चेंजेस आएंगे. जैसे कि देखो क्या चेंज आया बोलो. थर्ड में फंक्शन मेरा R से R है एंड f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है? x स्क्वायर है. तो देखो, ये और ये दोनों स्टोरी सही है. ऊपर Yes, वाला sir. part पे कोई चेंज नहीं है. बट बोलो मुझे अब रेंज क्या हो जाएगी? R plus union R 0. plus union zero. zero. हाँ, बट कुछ भी हो, पूरा R आया No. नहीं. therefore f is into function. लिखने में सुपर फास्ट रहना तुम. और एक दूसरी बात दोस्तों, f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर हो ना. देखो, जब R टू R हो ना, तो मैं ये कर सकता हूं. ये क्या कर रहा हूं मैं? सर ग्राफ प्लॉट करने का. Graph. नहीं, खाली बता रहा हूं. अब देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, सी मेनी वन फंक्शन दिखाई दे रहा है. Yes sir. बराबर. अब यहाँ पे होगा 5, तो इसका आंसर 25 आएगा. -5 का भी 25 आएगा. लाइक दैट. ये सब समझने के लिए है. ग्राफिंग इज, ऐसे मत सोचना कि मैं बोर्ड में ग्राफ नहीं दिखाऊंगा तो चलेगा. हाँ चलेगा, बट ग्राफ नहीं आवड़ेगा तो आगे के चैप्टर्स भी खो चुके. वाइवा में ग्राफ आता हो ना तो जल्दी वाइवा निपटेगा. चलो, नेक्स्ट इज कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन. f is from End to end. n to n. f of x equals to, f is from n to n. f of x is equals to क्या? x cube. चलो, fx1 equal to fx2 implies क्या होगा? बोलो बोलो. x1 cube equal to Equal to x2. x2 cube. तो क्या हुआ? Therefore f is One function. 1 function. चलो, रेंज बोलो इसकी. 1 9 1 9 1 8. Sir, 1 1 8 1 8 8 27. 27 64. हाँ, को n 64. आयो. No. ओके, ये n कौन है? कोडोमेन है. बराबर. Therefore f is into चलो, अब फिफ्थ चेक करो क्या होगा. बोल दो मुझे. Many one and into. Penny one and R માં 0 આવશે ને. Many one on two. many one into Into. Sir, many one કેમ થશે? हाँ सर. 1 1 नहीं આવે. हाँ सर, -3 નો ક્યુબ 27 થોડી ને થાય. मैं सॉरी मैं -27. देखो तो 1 1 and into Okay sir. 1 1 જ ને. હા. हाँ, 1 1 and into. वो बदली नहीं आई. चलो,
हो गया। अगर आर टू आर होता ना तो क्या होता? सर ऑन टू भी होता। हाँ, तो 1 1 भी होता, ऑन टू भी होता। ओके, ग्राफ पता है किसी को एक्स क्यूब का? हाँ सर। ओके, एक ही इंसान है जिसको ग्राफ पता है। ये होता है एक्स क्यूब का ग्राफ। टन 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 टन, ऐसे चला जाता ऊपर। ठीक है, स्पीकर ऑन रखना तो ऐसी म्यूजिक भी सुनाई देगी। ठीक है। સર સર આ ફિફ્થ વન માં જે રેન્જ આવશે એ આપણી શું આવશે? ફિફ્થ વન માં રેન્જ આવશે -1, પછી 0, પછી 1, પછી 8। સર તો પછી એમાં બી આપણે કેટલા બધા નંબર વચ્ચે સ્કીપ તો થશે ને, તો ઇન્ટુ થશે ને ફંક્શન? હા, તો ઇન્ટુ જ થશે ને, હા તો ઇન્ટુ જ કીધું ને મેં। हाँ सर इंटू One स्क्वायर। and મેમ into। સર એ R2R ની વાત કરે છે. તો અમે R2 ની વાતમાં તો પેલું કીધું ને ઓન ટુ થશે अच्छा 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 अच्छा, R2R માં ऑन टू થશે। यस, ओके, चलो કેવી R2, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अगर R2R હોય અને f of x equal to x cube હોય તો ચલો સૌથી પહેલા તો 1 1 થશે, એમાં કોઈ ડાઉટ नो सर। નહીં ને? હા, હા હવે બોલો ઇન્ટુ થશે, સોરી ઓન ટુ થશે એવું મેં કહું છું। બોલો તમને શું ડાઉટ લાગે છે? કયો નંબર નહીં આવે એવું બોલો। બોલો। હું કેવી રીતે 2 લાવવું છે? ઓકે, f of 2⁻⁴ લો। જો 2 આવ્યું ને? બોલો। सर टू थोड़ी ना। અલા કેમ? 2 આવ્યો તો सर ખરા? क्यूब रूट से ना। પણ ફંક્શન છે ને हाँ फंक्शन। હા, તું બોલે એ વેલ્યુ મેં લાવી આપું આર માંથી, તું જે માંગે એ નંબર તને લાવી આપું મેં। ઓન ટુ ફંક્શન છે, પણ હું જે બોલું એ વેલ્યુ તમે અહીંયા ના લાવી શકો। સમજાયું તમને? બોલો સર કઈ? 7 લાવી બતાડો। 7⁻⁴. અરે મુન્ના, એ અહીંયા ના આવે ઝેડ માં। અચ્છા હા, Z માં લાગ્યું R છે, તમે R2R કરો। એટલે તો મેં કહું છું અહીંયા બધું આવે, એટલે અહીંયા ઓન ટુ થાય, એટલે વંશ અહીંયા કઈ સ્કીપ ના થાય। ખબર પડી? હા સર ખબર પડી। यस, તમે પૂછશો, બોલશો, इंटरेक्ट करशो तो કંઈક શીખશો। ठीक है, बाकी दरवेश बापू की जय। कथा में बैठने वाले सारे लोगों को, भक्तजनों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर 1000 वैल्यू डालो और सेम आंसर आए? सर कांस्टेंट फंक्शन। હા કોન્સ્ટન્ટ। कांस्टेंट नहीं यार, यार ये मने ना गम्યું। fx is equal to x। આ રહ્યું હતું। fx equal to y કરતો ને y equal to 5, તો બધા આન્સર ये છે। है सर। કઈ દુનિયામાં જીવો છો? આ નવો ક્વેશ્ચન ના દેખાયો? બોલું દેખાયો કે નહીં? યસ ચલો f કઈથી કઈ? એક મિનિટ અમે ક્વેશ્ચન વાંચીએ। r થી r। અહીંયા જુઓ, f of x equals to શું? મોડ્યુલ હા મેં ઇન્ટીજર x। ઓકે, બરાબર। ચલો આજની તારીખ કઈ? 12/6/2021। ચલો f of 12 બોલો। 12। નહીં, મને 12 તારીખ નહીં ગમી, મને 11 તારીખ મારે યાદ રાખવાની છે। યસ, 11 તારીખ। f of 11 બોલો। 11 11। f of 11.1 બોલો। 11 11.01 બોલો। 11
11.007 बोलो. 11. 11. अच्छा हाँ Therefore, f is many one. many one function. ખબર પડી? Yes. આની રેન્જ કાઢીએ તો શું આવે? Sir, Integer. only Z. Only हाँ, Z. Z. હા રેન્જ કાઢીએ તો only z જ આવે અને Yes. is not equal to R. codomain. બરાબર? Therefore, f is F is into therefore f is into function. બરાબર? સર આનો ગ્રાફ છે? હા આનો ગ્રાફ કોઈને યાદ છે? Sir, step graph જેવો હોય. હા આનો ગ્રાફ સ્ટેપ ગ્રાફ જેવો હોય. ઓકે મને ઇન્ટીજર x ફંક્શન નાખતા આવડતું નથી કારણ કે મને મારી અરે હા કોને આપણે આયશા 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 ચલ 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 તારામાં ચાલતું હતું ને ના હેનેલ માં ચાલતું. Anil માં ચાલતું sir. હા ચલ હેનિલ કારણ કે સર તમે જે એપ વાપરો છો એ એપ પર મેં જોયું એક્સ નો ગ્રાફ જ નતો આવતો. હા હેનિલ જલ્દી 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 મુન્ના ચલ હા સર. Sir, હા sir એના સિમ્બોલ ખોટો નથી GIF માટે. સર કયો હોય? ખોટા છે. ઉપર આવું આવું જોઈએ, હા નીચે સર, વસ્તુ ઉપર ના આવવું નીચે જોઈએ. નીચે કશું ના હોવું જોઈએ. ના, ગ્રેટેસ્ટ. એ બંને સિમ્બોલ ચાલે એ પણ ચાલે ને આ પણ ચાલે. તમે એવું શીખવાડેલું એટલે sir. અરે ના યાર તમે નોટ્સ જુઓ બંને ચાલે એ પણ ચાલે આ બી ચાલે. ફ્લોરેક્સ FLOORX આ તારું યાર કેમ બગડી જાય છે દર વખતે? તું લેપટોપ માંથી જ કરે છે ને હેનિલ? Save as default કર દે. હા સર. હા સેવ એઝ ડિફોલ્ટ કર. ના મલ્ટીપલ ઓફ પાઈ નથી જોઈતું. ઓકે કર. હજુ નથી આવતું. ગ્રેડ નહોતું કર્યું. અચ્છા કર તો પાછું. આ જો આનું આવી જ જાય છે આવું. પેલા ઓટો ટિક કર. હા 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 કર જોઈએ. ઓકે એક મિનિટ કેમ થાય છે હું કહું તને. -5 થી 5 કર. એક્સિસમાં જ જા. -5 થી 5 જા. 5 થી 5 હા હવે કર જોઈએ. હવે ખાલી પેલું ઓકે કરને. અચ્છા ઠીક છે ચલ કરી નાખ હવે કરી નાખ હવે વન વન. આ બધા સેટિંગ હંમેશા રહેવા જોઈએ. आई गऊ चल चल ऊपर भी -5 થી 5 લઈ લે. આમાં કેવું હોય આપણા લેપટોપની સ્ક્રીન પ્રમાણે આને ગોઠવવાનું હોય. તારું કદાચ છે ને મારા ખ્યાલથી 15 ઇંચનું હશે સ્ક્રીન. હા હવે ઉભો રે. આ રેક્ટેંગલ દેખાય છે મને તમને બધાને રેક્ટેંગલ દેખાય છે? Yes. Yes sir, grades. હા તો પેલું છે ને -7 કરી દે x એક્સિસ પર. હા હવે કદાચ થઈ જવું જોઈએ. બધા એને નાડીશ. અરે આઈ ગયા શું વાત છે. ચાલ હવે ફંક્શનમાં લખ ફ્લોરેક્સ FLOORX. हाँ मैं थोड़ी देर बाद आऊं. ले लो दिखाई दे रहा है? कलर बदलना इसका ब्लैक कलर का. हाँ पता चला जीत?
यस सर। स्टेप ग्राफ, ठीक है। अगर कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन रखो तो समझ में आता है मेनी वन फंक्शन कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी उसके ऊपर गिरेगी। छोटू खबर पड़ी? हाँ सर। ओके दोस्त તારો કાલે શું પ્રોબ્લેમ થયો? સર સવારે છે ફૂટબોલ એટલે પણ કાલનો દિવસ એડજસ્ટ કરને। સર કાલનો દિવસ જ છે પણ એક જ દિવસ છે કાલે। ઠીક છે ચલો નેક્સ્ટ થઈ ગયું ને? Yes. करो आगे। हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। कल की एक्सरसाइज याद है ना? फॉरम હા રેન્જ એટલે શું કરવાનું? એક્સ એક્સિસ જોવાની। ધન્ય છે વાય એક્સિસ જોવાની, વાય એક્સિસ. મેં પગે લાગેલો બસ બહુ બહુ ધન્ય છે। હવે મને એમને કે એવું કે તું એક્સ એક્સિસ કોને કહેવાય? ફોરમ એક્સ એક્સિસ કોને કહેવાય? આવી જે હોય એને એક્સ એક્સિસ કહેવાય। એ બરાબર બોલી તું દોસ્ત। કદાચ તું આવું બોલી દેત કે હા ને એક્સ એક્સિસ કહેવાય તોય તું ટેકનિકલી સાચી થઈ જાત। ઠીક છે રેન્જ માટે શું જોવાનું? એક્સ એક્સિસ। ના ના મારા પ્રણામ કબૂલ કરો બસ। ભાઈઓ રેન્જ માટે શું જોવાનું? Y X અને ડોમેન માટે X. 15 ક્વેશ્ચન નો વિડિયો યાદ છે ને? Yes, sir. ઓકે ચલો ઠીક છે। મોડ્યુલસ ફંક્શન બરાબર। હવે જો એ લોકોએ શું કીધું એ નહીં કરો, આપણે મોડ્યુલસ ફંક્શન નું પોસ્ટમોર્ટમ કરી નાખો। ઓકે ચલો f of x is equals to modulus x। જુઓ f of -√2 બોલો શું આન્સર આવે? √2 પ્લસ √2 શું આન્સર આવે? √2 √2 therefore f is કેવું? many one function ખતમ બરાબર। એક આ છે અને બીજું આના ઓપ્શનમાં તમારે લખવું હોય તો શું લખાય? આ પણ લખાય ને f of x1 is equals to f of x2 therefore modulus x1 is equals to modulus x2। હવે આ મોડ્યુલસ ખોલે તો શું થાય? x1 equals to प्लस माइनस X। સર તો અહીંયા ઓર્ડિનલ્સ ના આવે x1 સાઈડ કેમ? f of x1 f of x2 હા f of x1 મોડ્યુલસ x1 કઈ x નહીં રાખવાનું આપણે કોઈ પણ કશું બી નખાય f of a f of b ગમે તે। Okay. હા therefore f is સર આ એક્ઝામ માં કયું લખવાનું? આ રાઈટ વાળું કે લેફ્ટ વાળું? આ બ્રાન્ડેડ છે આ ચાલે ઠીક છે। ઓકે સર। હું તમને કહું છું આ પણ ચાલે આ પણ ચાલે પણ આ તો આમ યુનિવર્સલ ટ્રુથ છે। આ ઇન્ડિયામાં ચાલે ખાલી ઠીક છે। બીજા કન્ટ્રીમાં જાઓ તો આવું ના લખતા તો આવું લખજો બરાબર। yes sir ના હવે આપણે આની રેન્જ કાઢીએ। ચલો મોડ્યુલસ x ની રેન્જ શું હોય? R plus union r 0। plus union 0 હા બોલો ખબર છે રેન્જ? રેન્જ બોલે તો R plus union 0। union 0 okay is it equal to codomain? no Not equal to હા codomain therefore f is f is into function ચલો મોડ્યુલસ નો ગ્રાફ જોઈએ આપણે જરા કેટલા લોકોને યાદ છે? ઓકે Sir. તો એક મિનિટ હાથમાં હવામાં બનાવો મોડ્યુલસ નો ગ્રાફ ચલો જલ્દી।
સર સ્ક્રીન શેર છે. હા બોર્ડ શેર છે. સર બધાએ બનાવવાનું. હવામાં બનાવો ગ્રાફ મોડ્યુલસ નો બનાવો જોઈએ. છોટું પેલા મારા જેવો ગ્રાફ બનાવ્યો પછી વિચાર્યું કે ના આ તો ઉલ્લુ બનાવે છે. એટલે એને આવું કરી નાખ્યું પછી આવું કરે છે ખબર નહીં હવે કે શું કરે છે. જોઈએ આપણે છેલ્લે ફાઇનલ આઉટપુટ. ઓકે ફાઇનલી છોટુ ઇઝ લાઈક ધીસ. બાકી પબ્લિક જુએ છે હજુ. મોડ્યુલસ નો ગ્રાફ બનાવો જલ્દી જલ્દી બનાવો. અગર આ તમારું નોઝ ઉપર નથી ને તો તમારો ગ્રાફ ખોટો છે. મેં તમને કેટલી વાર શીખવાડ્યું હતું નોઝ ઓરિજિન છે. ઓકે સો વોટ ઇઝ ધ ગ્રાફ બોલો. યસ ગ્રાફ શું છે. યસ 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 વેરી નાઇસ ચિલ્ડ્રન. બહુ બધા લોકોને યાદ આવ્યો ભલે પછી બીજાનું જોઈને બી આવ્યું. ગ્રાફ શું છે મોડ્યુલસ નો. એરો જેવું. Two rays intersecting at a point. હા પેર ઓફ રેસ. ઓકે સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ઓરિજિન. ચલો હવે આ ગ્રાફ ની વાત કરો તો મેની વન કે વન વન. Many one. Many one, કેમ કે બે Many જગ્યા પર છે. Okay. કેટલી y એક્સિસ કવર કરે છે. R plus union 0. R plus છે. કેવિન શું ખબર પડી ગ્રાફ થી કેવી રીતે રેન્જ લેવાની. બોલો. અલા કેવિન શું કરે છે. તું આમ કરતો અવાજ આવે છે. એક મિનિટ ઉભા રહો. મેં જોયું નહીં ફરીથી કર કઈ ગો. કેવિન 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 તુમ હો વહાં पे. કેવિન ગાયબ થઈ ગયો. હા કેવિન આવું કરતો ટક અવાજ આવે છે. केविन तुम हो वहां पे क्या मेरी आवाज सुन रहे हो. अरे तुम अपना माइक ऑन करो और बात करो मेरे से. हाँ अब बोलो. बोलने हाँ केविन તારું જ નામ છે ને. मैं मार पे कॉल चालतो मैं नहीं સાંભળ્યું. નો યાર તું આવા ટાઈમ પર કોલ પર વાત કરે છે. અરે સર એને કામ હતું કઈ એટલે કોનું કામ હતું. એને કેમિસ્ટ્રી નોટ્સ જોઈતા હતા. કોને. તારે ફ્રેન્ડ કેટલું મસ્ત લાગે ક્યુટ લાગે છે झूठ બોલે ત્યારે. ચલ કઈ વાંધો નહીં છોડ ના લાયક માણસ. સોરી. હા પ્રેમ ખબર પડી રેન્જ કેવી રીતે ડિસાઈડ કરવાની. હા સર. કેવી રીતે. સર વાય એક્સિસ પર જેટલો એરિયા કવર કરે છે. યસ ફોરમ શું. રેન્જ જોવા માટે વાય એક્સિસ પર જેટલો એરિયા કવર થાય એના પરથી રેન્જ અરે મળે. વાહ આવડી ગયું દોસ્ત. ઓકે ચલો નાઈસ. હવે આને આ જ વસ્તુ નેક્સ્ટ ટાઈમ સંભળાવજો મને પછી. ઠીક છે કિડ્સ તમે લોકો છે ને मतलब થોડું मतलब यू नो पिछवाड़े पे जोर दो तुम्हारा दिमाग चलेगा बराबर. चलो ये फंक्शन है 1 1 या मेनी वन. अगर 1 लिया तो आंसर 1. 1. 101 लिया तो 1 और 1001 लिया तो 1. ये मेरी गाड़ी का नंबर है 3532 लिया तो 1 बराबर. ओह ये तो मेरी वन फंक्शन है क्या बोलते हो. यस. यस therefore f is
मेनी वन। रेंज निकालो। 1. -1 Only 0 1 1. -1 0 1. ओके, इसको सिंगम फंक्शन क्यों बोलते हैं पता चला अभी? सर साइनम है ना? हाँ, साइनम को लोग सिंगम बोलते हैं ना, इसलिए। साइनम इसके लिए क्योंकि साइन पर डिपेंड करता है। क्योंकि वो मूवी में डायलॉग नहीं बोलता, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे में ईमान है। कौन सी मूवी सर? सिंगम। ओके। ओके, जरूरतें कम ही होगी ना इसकी, इसको पालने पोसने वाले 3 ही तो लोग हैं। -1 0 and 1। એનો ગ્રાફ તો 3 ડોટ। हाँ, इसका ग्राफ भी कैसा होगा देखो। साइन जैसा। ओके, एक लाल ग्राफ ऊपर आएगा ऐसे। Yes sir. यस, एक यहाँ पे ओपन डॉट रखा, फिर एक पीला कलर का डॉट 0 पे, हम्म, बराबर, और नीचे नीला ग्राफ। यस। ग्राफ कितने टुकड़ों में है? સર ઓપન ડોટ આવશે ને ત્યાં? ओ हाँ, हाँ, ऊपर। ठीक है। ग्राफ कितने टुकड़ों में है? 3। 3 टुकड़ों में है। यस, समझ गए? यस सर। સર ક્વેશ્ચનમાં તો 1 લખ્યું છે if x is less than 0 માં। સર -1 આવવું જોઈએ। अरे एक टेक्निकल एरर थे यार, માઇનસ -1 कर दी तू मैं बस। હા એ જ લે। हाँ, -1, यस 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 यस। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, मानना पड़े भाई, लास्ट क्लास के कंपैरिजन में आज बहुत ज्यादा चौकन्ने हो। गुड। सो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। हो जाए। સર આગળનો ક્વેશ્ચન જ નહીં ખબર। करू છું बस 6 क्वेश्चन। देखो, ये एफ का डोमेन है, कौन कौन है उसमें, और ये कोडोमेन है, कौन कौन है इसके अंदर? 4 5 6 7। और अब ये फंक्शन है, बोलो 1 किसके साथ गया? 2 5 के साथ, 3 6 के साथ, बराबर। चलो, is it a 1-1 function? यस। યસ સર। Yes So clearly we can see that it is a 1-1 correspondence। सब लोग अलग अलग लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। સર ક્લિયરલી we can see that It is a 1-1 correspondence। 1-1 correspondence एक नया वर्ड लाया for a change। It is a 1-1 correspondence। And moreover, चलो रेंज में कोडोमेन में से कौन छूट गया? 7। 7 is missing in the range, therefore क्या हो जाएगा? therefore range is not equal to, કોડોમેન તો ઇનટુ ફંક્શન। therefore range is not equal to codomain। સર આ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવું કમ્પલસરી છે? ના રે ના, બધું ચાલે, ને સર કરીએ તો કરો તો સારું જ છે।
See, 12th board exam is basically you will be full of so many talents inside you. Okay, but 12th board exam is considering only one talent. How nicely you are putting your case on the paper. That's it. Okay, how good you are explaining your stuff on the paper. ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वहां पे एक और टैलेंट मतलब ऐड हो जाता है कि हाउ गुड यू आर एट योर राइटिंग, हाउ गुड यू आर एट मतलब हाउ गुड योर हैंड राइटिंग्स आर एंड हाउ नाइसली योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. मैथ्स में ये सब चीजें मायने नहीं रखती, बट मैं जो बात करता हूँ ना वो एक मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ. ठीक है, अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा है इंटीग्रेशन का, अगर लास्ट में तुमने आंसर लिख दिया ना sin x प्लस रूट cos x प्लस c, अब तुमने कितनी भी घटिया प्रेजेंटेशन की होगी ना, बट वो sin x प्लस रूट cos x प्लस c है, मुझे तुम्हें 4 मार्क देने पड़ेंगे इज्जत से. ठीक है, घटिया प्रेजेंटेशन होगी तो मैं एक गाली दूंगा मन में, बट मैं 4 मार्क देने से तुम्हें मतलब नहीं रोक सकता. बट यही चीज तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में करोगे तो हो चुका तुम्हारा, क्योंकि वहां पे थियोरेटिकल कंटेंट भी होता है शायद. Yes, sir. Next question. 7th question. चलो. Whether the function is 1 1 onto or bijective. Okay, पहला केस देखो, जब भी कभी f(x) इक्वल टू लीनियर फंक्शन आए तो क्या होगा, मैंने आपको कुछ बोला था याद है? सर बाइजेक्टिव होता है वो. हमेशा वो बाइजेक्टिव होता है, 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है. ऐसा क्यों? चलो फटाफट मेरे साथ छाप लो केस. चलो क्या लिखेंगे? फर्स्ट केस बोलो. fx1 is equals to fx2 fx2 implies क्या होगा? 3 minus 4x1 3 minus 4x1 is equals to 3 minus 4x2 implies 3 3 cut x1 equal to x2. Therefore f is 1 1. अब इसकी रेंज में आपको कोई डाउट है? रेंज ऑफ f इक्वल टू क्या? R. ओ तेरी पूरा का पूरा कोडोमेन आ गया. ओके, 1 1 एंड लीनियर फंक्शन हो ना, मतलब पूरा कोडोमेन आवेज. समझ गए ना क्यों ऐसा? कोई भी वैल्यू रख तो आपका आंसर आई जैसा. अरे यार सिंपल वस्तु છે. આવશે. કેમ આવું કરો છો? લાઈન હવે 3 - 4x લાઈન તો સ્ટ્રેટ લાઈન આવશે ગ્રાફમાં એટલે. હા સ્ટ્રેટ. જો અમે લાઈન બરાબર બનાવી? हाँ. ના. ઓકે, આવી લાઈન બનાવવાની હોય. કેમ આવી? સ્લોપ સ્લોપ નેગેટિવ આવશે. हाँ नेगेटिव. સ્લોપ નેગેટિવ છે અને આ લાઈન રાઈટ છે. કેમ? કારણ કે એનો y ઇન્ટરસેપ્ટ આ લાઈનને તમારે આની જોડે કમ્પેર કરી જોઈ લેવાનું. y = mx + c. જો 11th નું મેથ્સ કાચું પાકું હશે તો પછી મજા નહીં આવે. ઠીક છે, 12th માં જજમેન્ટ નહીં આવે તમારું. ઠીક છે, આ લાઈન રાઈટ છે બરાબર. હજુ આમાં મારે એક્યુરસી લાવી શકાય છે, પણ આ તો ખોટી જ છે લાઈન. ખબર પડી? बिकॉज ये लाइन का स्लोप प्लस है, पॉजिटिव हो जाता. हाँ चलो, तो अब ये लाइन देखो पूरी y एक्सिस कवर कर रही है कि नहीं? एंड पूरी x एक्सिस कवर कर रही है? हाँ बराबर. चलो तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर फंक्शन इज, बोलो, ऑन टू. हाँ therefore f is onto function. बराबर. और तेरी दो चीज हुई. कौन कौन सी? एक तो 1 1 भी हुआ और साथ साथ में onto भी हुआ. बाइजेक्टिव. हाँ, therefore f is 1 1 and onto. मतलब क्या हुआ? f is
बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 and 1 2 को बोलते हैं बाइजेक्टिव। चलो सेकंड वाला करो। अब देखो fx1 इक्वल टू fx2 करोगे तुम यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आएगा 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल्स x1 टू equal to plus minus x2 हाँ x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2, तो f इज क्या हो गया anyone anyone Anyone. निवान। अब रेंज बोलो इसकी क्या होगी रेंज, zero ये फिर से पोपट क्या R plus. infinity plus union 0 क्या 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 r plus सर यूनियन r plus sir zero खाली नहीं r आवे plus फेंको फेंको लगाओ बबली, r plus sir खाली r plus zero नहीं आवे R केम plus. plus 1 they just 1 से infinity बोली लगाओ तुम, सबकी गलत हुई। ना सर r plus बराबर से r plus minus अच्छा हाँ बराबर close 1 से 0 to infinity N बराबर આવશે N. close 0 to open 1 एन वालों तो एकदम नवी वेरायटी है, तो ये कौन है तुम एन अर्ची હતી હા સર હવે બોલો છો તો જવાબદારી તો લો, એન કેવી રીતે આવે મને બોલજો। મેં નથી હા બોલ કેવી રીતે, પણ મેં નથી अच्छा પણ તો કોણ હતું એન વાળું, મેં તો R plus બોલી સ્ટાર્ટિંગ માં સર ક્લોઝ 0 ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટી આવશે ને, હે ક્લોઝ 0 ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટી 0.1 કેવી રીતે આવે, r plus minus close 0 to 1 open 1 તો એના કરતા 1 થી ઇન્ફિનિટી લખ ને। sir हाँ sir r plus કેમ ના આવે r प्लस માંથી 0.1 लाइन बदल आंसर में। okay देखो अब कॉमन सेंस वाली बात, ठीक है, आप है ना ये पता है मैथ्स पढ़ते हो बट कॉमन सेंस नहीं यूज करते हो। एक्स स्क्वायर सदा के लिए बोलो, greater than equal to 0 हाँ अब उसमें 1 ऐड हुआ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सदा के लिए 1 से बड़ा होगा ना, हाँ सर रेंज 1 से इंफिनिटी। ये जो कॉमन सेंस मिसिंग हो जाती है ना, फिर सब्जेक्ट भारी भारी हो जाते हैं, पता चला। और ग्राफ देखो क्या होगा, ये y एक्सिस देखो, ये ग्राफ था किसका, x square ना एक्स स्क्वायर का, square का बराबर, बट अब ये ग्राफ नहीं रहेगा। yes 1 Okay. to start हाँ ये ग्राफ अब ओए होए 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 नहीं नहीं, अरे वाह, ये ग्राफ 1 किलो ऊपर उठ जाएगा, क्यों, first 1 से sir 1 से नीचे कोई वैल्यू नहीं इसलिए हाँ बराबर, ओके ठीक है। पता चला, yes sir ओके। अब देखो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, ये ऊपर तक गया, yes बराबर, सो 1 टू इंफिनिटी रेंज, मेनी वन तो दिख ही रहा है, एक्स स्क्वायर आ जावे मतलब मेनी वन तो हो ज गया, बराबर। Yes. चलो नेक्स्ट, सर ये इनटू होगा ना पार्ट फंक्शन, हाँ बिल्कुल इनटू, ऑन लिखा है क्या, अरे हाँ वो एक मिनट, हाँ एक मिनट वो दोस्त मैं बिल्कुल ठीक कर लेता हूँ। हाँ therefore f is, ये पुराना उठाया था ना इसलिए, therefore f is into function, not equal to codomain हाँ not equal to codomain, correct। देखो दोस्तों ऐसे सम्स जो होते हैं ना, यू नो
कई बार खाने में कुछ अजीब सी चीज आ जाती है ना, ये वो टाइप के सम है। बराबर, पूरी डेफिनेशन का ही मजाक बना देते हैं ये लोग। बराबर, अब देखो fx1 इक्वल टू fx2 कितना अच्छा खासा चल रहा था ना अपना डेफिनेशन। बराबर, तो देखो अब यहाँ की डेफिनेशन भी जो है ना वो भी बड़ी अजीब है। सी, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, f ऑफ ओके, देखो यहाँ की डेफिनेशन है। अभी तक हम f ऑफ x1 x2 करते थे ना, यहाँ की डेफिनेशन देखो, f ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू f ऑफ a2 b2। नाउ व्हाट इज a1 b1? Order pair of Cartesian product of AB. दैट इंप्लाइज a1 b1 का क्या होता है आंसर? b1 B1 a1 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या होगा? B2 A2. a। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? B1 is equal to B2 and A1 is equal to A2. इसका मतलब ये हुआ कि b1 इक्वल टू b2 एंड a1 इक्वल टू a2। इसका मतलब क्या हुआ? a1 b1 इक्वल टू a2 b2। ओ, इसका मतलब क्या हुआ? f is फंक्शन, पता चला? बराबर, ओके। अब रेंज निकालते हैं। चलो, रेंज में क्या आएगा बताओ? व्हाट विल कम इन रेंज, टेल मी। पूरा का पूरा b क्रॉस a आवेगा। Yes sir. Yes, sir. तेरे को सारे एलिमेंट्स तो ऑर्डर पेयर फॉर्म करते हैं एक वैसे के। सारी की सारी ऑर्डर पेयर जो है वो आप a क्रॉस b में ले रहे हो, है ना? Yes sir. ओके, तो रेंज इक्वल टू क्या हुआ? रेंज इक्वल टू क्या हुआ? हाँ, कोडोमेन। Range is equal to codomain. Therefore, f is onto function. 8 हो गया, 9th। રેન્જ ના સમજે. આમાં તું આમાં છે ને તારે એલિમેન્ટ લઈ લેવાના, a માં 1 2 3 4, b માં 3 4, b માં 5 6 7 8, પછી a क्रॉस b કરવાનો। બરાબર, પછી 1 5 નાખે તો આન્સર શું આવે? 5 1। 2 4 નાખે તો આન્સર શું આવે? 4 2। સમજાયું? એટલે રેન્જ બી ક્રોસ એ આઈ એ સમજ ના પડે. હા હા, હું એ જ કહું છું, તારે લખ એના બદલામાં લઈ લે। જો કરું મેં, डाउट હોય ને તો એના બદલામાં 1 2 3 4 5 આવું લઈ લેવાનું, બી ના બદલામાં લઈ લેવાનું 6 7 8। अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? 15 एलिमेंट आएंगे। Yes, sir. Yes sir. ओके, चलो उनमें से कोई भी उठाओ। f ऑफ 1 6, तो आंसर क्या आएगा? 6 1। बराबर, बोलो। अब 6 1 आएगा। अब मुझे बताते जाओ, अगर 1 6 के बदले में मैंने 1 7 लिया तो आंसर क्या आएगा? 7 7 1. हाँ, तो कहने का मतलब जब मैं रेंज को इकट्ठा करूंगा तो पूरा का पूरा बी क्रॉस ए भर जाएगा ना। हाँ बराबर,
बट ये क्या है कि ऐसे वैल्यू लेता हूं ना मैं, तो मुझे समझ में आ जाता है, बट वहां पे पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। बात समझ में आई? जब मैं 161718 आंसर आए 617181, फिर 262728 आंसर आए 627282, बराबर। ये 15 उल्टे होके 15 आए बी क्रॉस ए के, तो पूरा ए क्रॉस बी डालेंगे तो पूरा बी क्रॉस ए मिलने ही वाला है, इसीलिए ये रेंज लिखा है ऐसे। अब डाउट क्लियर? यस ओके। हाँ, બસ સર બહુ થયો. આજુ બકા મારું બાકી છે। સર ચાલશે ને, બહુ ઊંઘ આવે છે. ત્યારે ઊંઘ આવે અરે છે યાર ઊંઘ મને તમારા કરતા વધારે આવે છે, બસ આટલું બતાવી એટલે જ દઉં। હા તો બસ ને સર. બસ પતિ જ ગયું છે, હવે તો હા એટલે જ બે જ સમ છે બાકી હવે ખાલી। બે સમ માટે તેને કઈ યાર કલંક લગાડો છો? કલંક મૂવી જોયું તમે? હા ના. સર જોયું જ, હા, જોયું છે, ના. બકવાસ છે. મેં સ્ટોરી ભૂલી ગયો કલંકની। એમાં કોણ હતું સ્ટારકાસ્ટ? માધુરી વરુણ ધવન, આલિયા ભટ્ટ. એમાં હિન્દુ મુસ્લિમ રાઇટ્સ હતા ને. આદિત્ય રોય કપૂર. મને ખાલી આલિયા ભટ્ટ જ યાદ છે। આલિયા ભટ્ટ, આલિયા સંજય દત્ત, ભટ્ટ માધુરી દીક્ષિત. કોઈકની સેકન્ડ વાઇફ હોય છે એવું હોય છે ને? ના, માધુરી હોય છે। હોય છે. મને સ્ટોરી યાદ નથી, હું કઈક બે સ્ટોરી મિક્સ કરી રહ્યો છું। ઓકે, એક એ હા હા એવું એવું હોતું નથી, પણ એ બે જણને લાઈક કરે છે એવું હોય। વાઇફ બનવાની હોય બટ એ લાઈક સર કરે તમે છે, સ્ટોરી યાદ કરી કરી કલંક નહીં યાદ કરી રહ્યા છો. એના કરતા છોડી દીધું આ તમને। એ જ સર. એ જ છે। ઓકે ચલો, તમે વિચાર કરો, અમે જઈએ। હા મેં એમને બસ 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 આટલું બતાવી દઉં, પછી પછી બ્રેક આપું છું, ઠીક છે? ચલો 9th માં આ બહુ અઘરું થઈ ગયું। 1 લઈએ તો 1 અહીંયા નાખવાનું પહેલામાં 1 + 1 2/2 1। 3 લઈએ તો થઈ ગયો તો નથી થયો। 3 લઈએ તો સર તો Oh, ફર્સ્ટ ડે કરાયો તો 2। બાબા નથી આયશા એના જેવું, તું જો જરા। 5 લઈએ તો 3 3 3 7 લઈએ તો 4 4। ઓકે 2 લઈએ તો 1 1। 4 લઈએ તો 2 6 લઈએ તો 3 3। ओ तेरी, ये तो क्या हो गया? many one function f is many one function। समझ में आ रहा है? यस चलो। यस और मेरे को यहाँ पे साथ साथ में रेंज भी दिख गई। चलो रेंज क्या है? एन n n हाँ पूरा का पूरा कोडोमेन इज इक्वल टू कोडोमेन। टॉप टॉप टू पूरा n आ गया। ओके, पूरा का पूरा कोडोमेन आया, बराबर। ठीक है, कोडोमेन। देयरफॉर f is क्या? ऑन टू ऑन टू फंक्शन ऑन टू। बाइजेक्टिव बोल सकते हैं इसको? नो सर yes no sir बोल सकते हैं, नो क्यों नहीं? सर मैनी वन और ऑन टू वन वन हो हाँ मैनी वन है 1 1 नहीं। हाँ, चलो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ओके, f of x इक्वल्स टू क्या है? x - 2 अपन चलो अब f of a इक्वल टू f of b। बोलो f of a क्या होगा? इज इक्वल्स टू, यहाँ बोलो। b - 2 upon b - 3 अब a इक्वल टू b लेके आना है। चलो 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 जल्दी साथियों। a - 2 इंटू b - 3 इज इक्वल्स टू a - 3 इंटू
बोलो क्या होगा, ए बी प्लस 6 माइनस 2b माइनस 3a। यहाँ पे बोलो ए बी प्लस 6 माइनस 3b माइनस 2a। चलो ए बी उड़ा दो, प्लस 6 उड़ा दो, प्लस b उड़ा दो, क्या बचा, a इक्वल टू b। क्या बोलते हो? 1 1 5 Yes. Yes. Therefore f is 1 1 Yes. अच्छा। Function. अब मैं आपको रेंज सिखाता हूं फाइंड करना। देखो रेंज फाइंड करना भी एक अपने आप में ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों। अब जाके तो क्वेश्चन का कुछ लेवल बना। एक मिनट आप fx इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 बराबर। सर a equal to b તો એથી થાય સર। અરે જો તો ખરા આવ્યું તો ખરા, બધું કટ થઈ ગયું। -2b -3a -2 આવ્યું ને, પછી આપણે 3 ને કોમન નીકાળીએ ને 2 ને કોમન નીકાળીએ તો a - b 3 * a - b = 2 * a - b આવે છે। महाभारत खत्म। Yes, sir. હવે પૂછે છે રાવણ કોણ થી। જો આ -3b આ બાજુ આવ્યું, -2b + 3b = આ 3a પેલી બાજુ ગયું, 3a - 2a આવ્યું ને, a = b। હા બરાબર। યુરિન લેવાનું છે? હા। ओके अब मैं इसकी रेंज कैसे निकालूं बोलो। यू नो अभी तक के क्वेश्चंस कैसे थे कि मैं देख के ही मतलब रेंज निकाल लेता था, बराबर ना। Yes. तो अब इसकी रेंज में कैसे निकालूं? तो रेंज निकालने की ये टेक्निक याद रहे। इसको मैं y कर लेता हूं, x - 2 अपॉन x - 3। अब y के बारे में सोचने का। ओके yx - 3y = x - 2। x को अकेला करो, yx - x = 3y - 2। x को अकेला करो तो क्या होगा, x अंदर y - 1 = 3y - 2। तो x = क्या होगा दोस्तों बोलो, 3y - 2 अपॉन अपॉन y - y 1। - 1। अब आप y के बारे में बोलो, y क्या नहीं हो सकता? सर ओके 1 नहीं हो y सकता 1 भाई। नहीं हो सकता। यस y बेचारा सब कुछ हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। हियर चलो अब देखना, हाँ y क्या नहीं हो सकता, 1 देखो तो ये रेंज हुई, 1 को छोड़ के सब कुछ हो सकता है ना भाई। यस सर। ओके तो रेंज ये हुई बिकॉज y कैन नॉट बी 1। हाय बेटू, हेलो करूँ છે? एक मिनट, हाँ एक मिनट। हाँ चलो तो अब समझ में आया, y सब कुछ हो सकता है, 1 नहीं होगा। ओके एंड इस क्वेश्चन का चार्म कैसे, मतलब ये सबसे चेयरफुल क्वेश्चन था अभी तक का, क्योंकि
देखो यहाँ पे रेंज में क्या दिखेगा मुझे, वाई एक्सिस पे 1 के पास आएगा ना ग्राफ, तो 1 पे वो अपना मुंह मोड़ लेगा, ठीक है। एंड 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 डोमेन के अंदर देखो, डोमेन में कौन अलाउड नहीं था, 3 अलाउड नहीं था। तो डोमेन में ग्राफ जो जैसा मुंह 3 पे बनाएगा ना, ऐसा मुंह वाई एक्सिस पे ग्राफ कहाँ बनाएगा, 1 पे। 1 पे बनाएगा। पता चला मैंने क्या बोला? यस सर। ओके, देखते हैं। एक मिनट। वेदांत क्या बोला मैंने? सर ऐसा बोला कि डोमेन में 3 नहीं ले सकते, इसलिए 3 से वो मुंह मोड़ लेगा, और रेंज में 1 नहीं ले सकते, इसलिए 1 से वो मुंह मोड़ लेगा। करेक्ट, वेरी गुड। ओके वंश, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग फिर से समझाओ, मुंह मोड़ वाली बात नहीं। સર રેન્જ માટે बनने માટે સર આપણે આજે સમ કર્યો છે જ ને જ્યોમેટ્રિકલ માટે, તો સર તો આપણે પહેલા એમાં f of x f of a is equal to f of b લઈ લીધું, પછી આપણે એની જે આપણને ઉપર नहीं, आई थिंक हाँ फॉरम रेंज में मुझे 1 पे क्या दिखेगा? 1 તો છે જ નહીં. हाँ मतलब શું થશે? आप ब्रेक થઈ જશે. એટલે 1 पर ग्राफ क्या ब्रेक થશે? x एक्सिस पर के y एक्सिस पर? y એક્સિસ પર. y एक्सिस पर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। y एक्सिस पर 1 नहीं देखाय મને, કવર થતો, અને x एक्सिस पर મને શું કવર થતું નહીં દેખાય? 3 કવર થતું નહીં દેખાય। આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? ઓકે ચલો જોઈએ હવે આપણે, બોલો ક્વેશ્ચન શું હતો? x - 2 upon x - 3। ओके हम में से एक इंसान नहीं रहा, कहाँ गया? क्या शेयर हुआ? ફેમિલી સ્ટોરી YouTube ની સ્ટોરી। પણ હું અહીંથી ન્યૂ સ્ક્રીન કરું છું તો થયું अभी થયું નવી સ્ક્રીન આવી નહીં? જતી રહી। સ્ક્રીન શેર બંધ. આવ્યું બરાબર। चलो डेस्मोस में मैं क्या डालूंगा, बट ठीक है। बोलो ऊपर क्या था न्यूमरेटर में? सर x - 2। x - 2 x - 2 ग्राफ तो अपने रंग बदलते ही रहेगा। हाँ, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था? x - 3। देखो चलो इतना क्लियर। हाँ अब जो चीजें देखनी थी वो बात करते हैं। देखो क्या दिखाई दे रहा है? 1 पर y एक्सिस पर ग्राफ देखते। हाँ x एक्सिस पे ग्राफ कहाँ नहीं है? सर 3 पे नहीं है। मुझे 3 पे नहीं होता हो ऐसा देखना है, ठीक है। चलो देखो 3 पे टुकड़े हुए। यस सर। और y एक्सिस पे ग्राफ कहाँ नहीं है? 1 पे नहीं है। देखो 1 आपको छोटे छोटे स्क्वायर काउंट कर सकते हो? यस सर। ये ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है, और वही छोटे छोटे स्क्वायर देखो 3 पे भी दिख रहा है x एक्सिस पे। यस सर। समझे आप? हाँ तो डोमेन में 3 के अलावा सब कुछ है, एंड y एक्सिस का कवर अप 1 के अलावा 1 के अलावा सब कुछ है। हाँ ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि कौन सा ग्राफ है टिपिकली, बराबर है, तो अगर तुम साइंस के स्टूडेंट होते तो तुम बोलते बॉयल्स लॉ वाला ग्राफ, बट तुम छावीपुर के लोग हो जिनको सिर्फ मैथ्स आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता, तो आप बोलोगे ये 1/x वाला ग्राफ है, टिपिकल 1/x बिहेवियर। इसके पहले 1/x का ग्राफ याद है आपको? क्या था फर्क? 0 पे
ब्रेक हुआ था। वो 0 पे 1 मिट ब्रेक हुआ था। तो 5 ग्राम शिफ्ट कर लो, 0 पे ब्रेक हुआ था दोनों जगह पे, एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी, क्या बात करते हो, है ना? ये हाँ, तो इसका शेप बदला नहीं था। देखो अभी भी बताऊं, इसी के अंदर मैं 1/x डालता हूं, ओके, एक और ग्राफ 1/x, सी आया दूसरा ग्राफ। यस सर। बिहेवियर नहीं बदला, ग्राफ का पैटर्न नहीं बदली, ठीक है, खाली अरेंजमेंट वो जो वहां था वो चीज यहाँ आ गई। इसको हटा के देखो तो देखो ये 1/x वाला ग्राफ है वही, अंडरस्टूड? यस। हाँ, तो जब जब मतलब यू नो, अब आप क्या करो, जितने जितने पॉलिनोमियल्स आते हैं दिमाग में ग्राफ की प्रिंट डाल दिया करो। आगे जाके डिफरेंशिएशन करना है, एओडी करना है, एरिया अंडर द कर्व करना है, बहुत कुछ करना है। तो ग्राफ जितना मुंह पे होगा उतना जल्दी होगा काम तुम्हारा, मतलब ऐसे ही देख अंदर अंदर देख के ही मतलब आपके कैलकुलेशंस होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक सब कुछ खत्म हो गया। सर हाँ, सर अभी आपने जो रेंज करने के लिए मेथड फाइंड की वो स्टैंडर्ड मेथड है सर? दैट इज द स्टैंडर्ड मेथड, यस, ओके। સર हाँ, સર રેન્જ માટે એક બીજી બી મેથડ હતી ને, પેલું ઇનઇક્વાલિટી ની વચ્ચે મૂકીને પછી એ કરવાનું 11th માં. આ તું નવું લાવેલા કશું, ફરીથી બોલ। સર બે બાજુ ઇનઇક્વાલિટી મૂકી દેવાની પછી ફાઇન્ડ કરવાની. अच्छा, ये तो ट्रिगोनोमेट्री में હતું, सॉल्यूशन सर। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेंज હતી। याद आया, sin x और -1 ट्रिगोनोमेट्रिक रेंज थी वो। यस हाँ सर। सर। हाँ, ओके, चलो 11th एमसीक्यू का आंसर x⁴ है, मतलब फंक्शन कैसा हो गया? फंक्शन मैनी वन। anyone एक सेकंड, ओके, सॉरी। हाँ, f(x)=x² कैसा होता है दोस्तों? ऐसा होता है, यस। यस सर। हाँ, x⁴ में वो थोड़ा और घुस जाएगा अंदर, x�6 में और x�8 में और, ठीक है, बट वो ग्राफ का बेसिक शेप वही रहता है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। चलो, कैसा फंक्शन, मेनी वन या 1/1? मैनी वन। મેની વન. मेनी मैनी वन ऑन टू इनटू इनटू, क्यों? into બધા નંબર पूरे सारे वैल्यूज नहीं आर आते। सेट का उसमें आएगा नहीं। अरे ऊपर नुच कवर करे ने, अर्धी ज y एक्सिस Yes, कवर sir. करे ना करे, इनटू, ओके। चलो 12th में सर ये ऑप्शन का होगा ऑप्शन। many one into इनटू ऑप्शन से होती है। नथी सर। डी आंसर सर। d, नाइदर 1/1 nor 1/2। હા d એવું કે છે 1/1 નથી, એનો મતલબ many one यस છે, सर। on 2 નથી, એનો મતલબ into છે। इंटू फंक्शन। ट्वेल्थ 1/1 मैनी वन 1/1 आंसर सर। 1 सर लीनियर है तो आ तो पेलू हશે 1/1 ऑन टू। 1/1 ने, यस सर। 1/1 ऑन टू। हाँ 1/1 पक्को। यस। હા चलो, Yes. what about on 2 into ऑन टू। सर ऑन टू on 2 on 2 के into, ऑन टू। ऑन टू okay, into on 2 બકા બધું આવશે, બોલ શું નહીં આવે? તું કેવી રીતે હા, પગર 2 લાવો 2 લાવવું છે, 3/2 લે,
સોરી 2/3 2/3 2/3 લે. હા બરાબર. મેં ફરીથી કહું છું R2 R linear expression is always onto function. સર બાયજેક્ટિવ પણ ને. હા બાયજેક્ટિવ પણ યસ. ખબર પડી આટલું? Yes. હા સર